Yashodanandana Prajajanaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Madan Mohan Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada ki Shri Radha Madan Mohan ki Shri Krishna Balaram ji ki Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Shri Gauranitai ki Shri Prahlad Nrsimhadev Bhagavan ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki Samaveda Bhaktivinoda ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलूँगा। मेरा हिंदी बुरा है या इंग्लिश आएगा। हिंदी इंग्लिश बोलेंगा, इंग्लिश मिक्स होएगा। तो Canto 9 Srimad Bhagavatam, text number chapter number 10, text number 9. ये 9, 10 और 11 आज करेंगे और श्रील प्रभुपाद के purport 11 में है, so 11 का text हम श्लोक पढ़ेंगे। मैं 9 और 10 का श्लोक पढ़ेंगे सिर्फ मैं, और 11 का श्लोक हम दोनों पढ़ेंगे। राक्षसवासुर्व्यक्तृक्ता रूपम शुद्ध बुद्धिस तस्या करा त्रिशिरा दुशानमुख्या बंधुन जग्ने चतुर्दश सहस्रम अपरिणीय कदोन्दपानिरतमानवासकृच्छम्। A translation in English मैं बोलूँगा। While wandering in the forest, where he accepted a life of hardship, carrying his invincible bow and arrows in his hand, Lord Ramachandra deformed Ravana's sister, who was polluted with lusty desires, by cutting off her nose and ears. He also killed her 14,000 Rakshasa friends, headed by Kara, Trishira, and Dushan. Sorry, a minute. Nina vapushashramato prakshishto maricham ashu visheke nayatha kamugra. Translation. O King Parikshit, when Ravan, who had 10 heads on his shoulders, heard about the beautiful and attractive features of Sita, his mind was agitated by lusty desires, and he went to kidnap her. To distract Lord Ramachandra from his ashram, Ravan sent Maricha in the form of a golden deer, and when Lord Ramachandra saw that wonderful deer, he left his residence and followed it and finally killed it with a sharp arrow, just as Lord Shiva killed Daksha. So ये वाला 11 text है, हम दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। रक्षोदमेन वृकवाद्विपीने समाक्षम् रक्षोदमेन वृकवाद्विपीन समाक्षम् वैदेहराजा दुहितार्यपारपितायम् वैदेहराजा दुहितार्यपायापितायम् भ्रातृवने कृपाणवत्प्रियया वियुक्ता भ्रातृवने कृपाणवत्प्रियया वियुक्ता स्त्रीसङ्गिनं गतिमिति प्रत्ययांश्चचार
Stri sanginam gatimiti pratayangshchara Rakshodamena vrikapatvipine samaksham Vaideha Raja Duhitarya Payatayam Vratravane Kripanavat Praya Viyukta Stri Sanginam Gatimiti Pratayangshchara Prabhus Rakshodamena Vrikapatvipine Vishanaksham Vaideha Raja Ravane Kripanavat Praya Viyukta Sri Sanginam Gatimiti Pratayang Suchara Rakshodamena Vrikapadapine Samaksham Vaideha Raja Dihityari Paya Pitayam Ravane Kripaya Vyakta Sri Sanginam Gatimiti Pratayang Suchara Rakshodamena Vrikapadapine Samaksham Videha Raja Dihitaryapavikatayo Ravapane Kripanavatriyaya Yukta Sri Sanginam Gatimiti Rakshodamena Vrikavadipine Samaksham Videha Raja Dihitaryapavikatayo Mataji's Adamena Vrikavadipine Videha Raja Dihitaryapavikatayo Bhatravane Kripanavatraya Viyukta Sri Sanginam Gitimiti Patayangshchara Raksha Sa Adamena Raksha Adamena by the most wicked among Rakshasas Ravan Vrikavat like a tiger Vipine in the forest Asamaksham unprotected Vaideha Raja Duhitari by this condition of Mother Sita, the daughter of the king of Videha, Apayapitayam, having been kidnapped, Bratra with his brother, Vane in the forest, Kripanavat,
as if a very distressed person. Priyaya, by his dear wife. Viyukta, separated. Stri Sanginam, of persons attracted to or connected with women. Gatim, destination. Iti, thus. Pratayan, giving an example. Chachara, wandered. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. When Ramachandra entered the forest and Lakshmana was also absent, the worst of the Rakshasas, Ravan, kidnapped Sita Devi, the daughter of the king of Videha, just as a tiger seizes unprotected sheep when the shepherd is absent. Then Lord Ramachandra wandered in the forest with his brother Lakshman, as if very much distressed due to his separation from his wife. Thus he showed by his personal example the condition of a person attached to women. Purport by Srila Prabhupada. Purport is quite long. We have body purport here. In this verse, the words Stri Sanginam Gatim Iti indicate that the condition of a person attached to women was shown by the Lord himself. According to moral instructions, Grihe Nadim Vivarjayat. When one goes on a tour, one should not bring his wife. Formerly, men used to travel without conveyances, but still, as far as possible, when one leaves home, one should not take his wife with him, especially if one is in such condition as Lord Ramachandra when banished by the order of his father. Whether in the forest or at home, if one is attached to women, this attachment is always troublesome, as shown by the Supreme Personality of Godhead by his personal example. Of course, this is the material side of Stri Sangi, but the situation of Lord Ramachandra is spiritual, for he does not belong to the material world. Narayana Paro Vyaktat. Narayana is beyond the material creation. Because he is the creator of the material world, he is not subject to the conditions of the material world. The separation of Lord Ramachandra from Sita is spiritually understood as Vipralamba, which is an activity of the Hladini potency of the Supreme Personality of Godhead, belonging to the Sringara Ras, the mellow of conjugal love in the spiritual world. In the spiritual world, the Supreme Personality of Godhead has all the dealings of love, displaying the symptoms called Satvika, Sanchari, Vilap, Murcha, and Unmad. Thus, when Lord Ramachandra was separated from Sita, all these spiritual symptoms were manifested. The Lord is neither impersonal nor impotent. Rather, he is Satchidanand Vigraha, BS 5.1, the eternal form of knowledge and bliss. Thus, he has all the symptoms of spiritual bliss. Feeling separation from one's beloved is also an item of spiritual bliss, as explained by Srila Swarup Damodar Goswami. Radha Krishna Pranaya Vrikriti Hladini Shakti. The dealings of love between Radha and Krishna are displayed as the pleasure potency of the Lord. The Lord is the original source of all pleasure, the reservoir of all pleasure. Lord Ramachandra therefore manifested the truth both spiritually and materially. Materially, those who are attached to women suffer, but spiritually, when there are feelings of separation between the Lord and his pleasure potency, the spiritual bliss of the Lord increases. This is further explained in Bhagavad Gita 9:10. Avajananti mangura manusim tanumashritam parambhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. One who does not know the spiritual potency of the Supreme Personality of Godhead thinks of the Lord as an ordinary human being. But the Lord's mind, intelligence, and senses can never be affected by material conditions. This fact is further explained in the Skanda Puran as quoted by Madhavacharya. Nitya Purna Sukha Jnana Swarupasya Yato Vibhu
भक्तोऽस्य रामत्याख्या तस्य दुःखं कुतो नृति तथापि लोकशिक्षार्थम् अदुःखो दुःखवार्तिवात् अन्तर्हितं लोकदृष्ट्या सीतमासीत् स्मरान् इव ज्ञानपनार्थं पुनर्नित्य सम्बन्धा स्वात्मना श्रिया अयोध्यया विनिर्गच्छान् सर्वलोकस्य चेश्वरः प्रत्यक्षं तु श्रिया सार्धं जगमन्नादिराव्यया नक्षत्रमासगानित्यं त्रयोदश सहस्रकं ब्रह्मलोकसमं चक्रे समस्तं क्षितिमण्डलं रामो रामो रमा इति सर्वेषामभवत् तदा सर्वो रममयो लोको यदा रमस्त्वपालयात्. It was actually impossible for Ravan to take away Sita. The form of Sita taken by Ravan was an illusory representation of Mother Sita, Maya Sita. When Sita was tested in the fire, this Maya Sita was burned, and the real Sita came out of the fire. A further understanding to be derived from this example is that a woman, however powerful she may be in the material world, must be given protection. For as soon as she is unprotected, she will be exploited by Rakshasas like Ravan. Here the words Vaideha Raja Duhitari indicate that before Mother Sita was married to Lord Ramachandra, she was protected by her father, Vaideha Raj. And when she was married, she was protected by her husband. Therefore, the conclusion is that a woman should always be protected. According to the Vedic rule, there is no scope for a woman's being independent. Asamshkam, asamaksham. For a woman cannot protect herself independently. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvang Sujivam Sadvaitam Savadutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Manchakalpa Turubhischa Kripa Sindhu Bhavevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'd like to ask all the seniors for blessings, Ashirvad. मेरे को ऊपर करो आपका हाथ में. I can say something that will be pleasing to Parampara Srila Prabhupada, and हम सभी गोलोक वृंदावन जल्दी जा सकते हैं. जल्दी है नहीं, पेशेंट के साथ देरी आते हैं जल्दी. So ये टाइम एंडिंग ये 8:45 है, 15 मिनट है. So मैं पर्पट में पढ़ाई किया और 3 सेक्शन में ढूंढा.
Shri Shri Radha Madan Mohan, Shri Shri Krishna Balaram, Shri Shri Jagannath Baladev Subramani, Shri Shri Gauranga, Shri Nrsimhadev Bhagavani ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So मैं purport पढ़ाई किया और तीन सेक्शन ढूंढा. एक सेक्शन है सीता के सीता इज किडनैप्ड, हरण हो गया. और सेकंड सेक्शन है राम क्यों धरती आ जा रहा है. Why does Ram come to the material world? And the third section I saw is Lord Ram's teachings. आप Lord Ram क्या हम सभी लोग चाहते हैं? What does Ram want? What does Lord Ram want to show us? What does Lord Ram want to teach us? By this example of him being sad. दुखी हो गया, सीता के हरण हो गया, फिर एकदम दुखी हो गया. फिर यह टीचिंग क्या है? ये तीन सेक्शन है. ये श्रीमद् भागवतम और रामायण और भगवत गीता, ये तीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स है सारी जगत में. हर कंट्री में ये तीन बुक्स, ये कितना कल्चर के साथ, ये लोगों के साथ, ये एजुकेशन, ये तीनों बुक्स have changed the world. People don't know, but these three books are the most important books in the whole world. Bhagavad Gita, Ramayana और Srimad Bhagavatam. और धीरे धीरे से के साथ ये इस्कॉन में चलेंगे. ये 10,000 year के golden age सभी देखेंगा कितना potent श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, रामायण है. धीरे धीरे से होएगा. हम देख रहे हैं ये क्या है. In the world everyone is taking up this Bhagavad Gita, everyone is interested, so we will see what is happening. Ramayana has 7 kandas, as I've been told. Lord Balakanda एक कांड है, राम के बच्चा का pastime है. ये अयोध्या कांड describes time in Ayodhya. फिर आर्य कांड describing Ravan. और किष्किंधा कांड मीटिंग विद हनुमान के साथ, ये पास्ट टाइम क्या है. फिर सुंदर कांड है, ये युद्ध कांड है, ये युद्ध के क्या हुआ, हनुमान ये माउंटेन को लिफ्ट किया. और उत्तर कांड ये फाइनल कांड है. फिर ये रामायण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन लॉर्ड राम है. वी नो ये राम इज incarnation of Lord Krishna. ये लीला पुरुषोत्तम कौन है? ये कृष्णा. ये प्रेम पुरुषोत्तम कौन है? चैतन्य महाप्रभु. ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लॉर्ड राम. से 3 पुरुषोत्तम है और सब बुझ में फॉर्म. ये राम, चैतन्य और कृष्णा, ये नॉन डिफरेंट है. और राम में नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, हम जप करे हैं 16 माला मिनिमम एवरी डे. और हिंदुस्तान के राम के नाम एकदम रामचंद्र स्मरण है. You remember Ramachandra. In general, when we hear Ram, also Balaram is, Srila Prabhupada said Ram means Balaram. और generally में बलराम का एक पहला नाम था राम, फिर बलराम हो गया. So ये general understanding है. ये तीसरा understanding है, राम के मतलब ये राधिका रमन. ये गौड़ीय वैष्णव के भाव राधिका रमन है. ये राम का, कृष्णा और राधा सब कुछ है. So ये वाला, ये 3 अंडरस्टैंडिंग है राम के नाम के महामंत्र में है. और फिर ये टेक्स्ट नंबर 9 बोल रहे हैं यस कहानी क्या है, लीड अप ये कहानी क्या है बेसिकली. सो सुपर्णखा क्या किया, और रामचंद्र लक्ष्मण को आदेश किया ये सुपर्णखा के नाक के कान में हत्या करो, ये कट. सो सुपर्णखा भूख लग रही थी और राम के चरण ढूंढा, फॉलो किया राम के आश्रम में. और सुपर्णखा राम के देखा और बहुत पसंद आ गया.
और फिर सुपर्णा का फॉर्म का चेंज किया, ये राक्षसी था बट एकदम महारानी बनाया, लाइक ब्यूटीफुल, श्री श्री ब्यूटी है ना, श्री श्री के साथ, तो एकदम ब्यूटी आ गया। और राम के पूछा आपके हाथ चाहिए राम जी, मैं आपका शादी चाहते हैं। और राम बोला नहीं, मैं सीता के शादी है, लक्ष्मण और उसके पास जाओ, लक्ष्मण ये बड़ा स्ट्रांग है और ये आपका आपका इच्छा पूरा कर सकते हैं। और ये सीता शूर्पणखा के लक्ष्मण जाया और राम के मजाक के बोल रहे हैं, लक्ष्मण जाओ और उसका पूरा आपका इच्छा पूरा करूंगा। ये लक्ष्मण सुना, ये लॉर्ड राम का हंसिया के बात। और लक्ष्मण बोला ये सुपर्णखा आप नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं छोटा भाई हूँ, आप मेरे को शादी करेंगे फिर राम को सीता में सर्वेंट दासी होएगा, दासी होएगा। सो बेटर आपको राम को जाओ, आप कितना सुंदर है, राम को सीता के चलेंगे, राम will leave Sita because you are so beautiful. So Lakshman is joking, but शूर्पणखा कौन है ये, कितना innocent है, कुछ नहीं जानता है, हंसी के बात के नहीं जानते है, एकदम राम और ये lusty desires है, so she doesn't understand, समझ नहीं आया है। So राम के सीता के पास जाया और she wanted to kill her. Surpanaka wanted to kill Sita, and as soon as Surpanaka कोशिश करे हत्या के सीता करूंगा, ये राम वाज के किया और सुपर्णखा गिर गया एकदम। और राम फिर बोला लक्ष्मण को ये काटो, ये न आँख कान के काटो। से बाद में सीता में रावण बोला ये बहुत बहुत सुंदरी है, ये वन में राम के साथ है और आप ले लो, आपका वाइफ आपका बीबी बनाओ, वाइफ बीबी है, आप बीबी। सो रावण का लस्टी डिजायर्स इंक्रीज हो गया, बिकॉज रावण लस्टी पर्सन हो ऑलरेडी, ये कितना लोभ है, ये मोह है, ये बट लस्ट रावण का भाव है अंदर दिल में, सिर्फ लस्टी डिजायर्स है। सो रावण के मन में एकदम इल्यूजन होएगा। फिर मरीचि को बोला, मरीचि आप गोल्डन डियर बनाओ, आपका यू टर्न इनटू अ गोल्डन डियर एंड यू डिस्ट्रैक्ट सीता देवी, सो आई कैन यू डिस्ट्रैक्ट राम, सो आई कैन टेक सीता, मैं सीता को हराना चाहते हैं। सो सीता देवी वन में था और दिस गोल्डन डियर देखा और फिर राम के पास जाया, फिर बोला ये गोल्डन डियर मैं चाहता हूँ ये गोल्डन डियर। और राम बोला ओके, आप वन में है, मेरे को साथ में है, आप कितना ऑस्टेरिटी को क्या त्याग कर रहे हैं आप, एक गोल्डन डियर मैं आप जो देंगे, नो प्रॉब्लम, आप कितना परेशानी है वन में। सो राम जाया, लक्ष्मण was staying with Sita Devi and लक्ष्मण protected Sita। और फिर रावण बोला ये लक्ष्मण नहीं जा रहे हैं, कैसे मैं करूँगा। फिर मरीचि का सेकंड ऑप्शन, ये आवाज के राम बोला, राम हेल्प मी, यू नो। और फिर लक्ष्मण सीता के सुना और she's भाई हो गया, ये बहुत फिर में अंदर हो गया। फिर लक्ष्मण बोला लक्ष्मण के she told Lakshman you go। लक्ष्मण said no, मैं नहीं जा सकते, राम के एकदम पुरुषोत्तम है, ये ईश्वर परमा कृष्ण है, ये क्या ये समस्या नहीं है। फिर सीता बोला लक्ष्मण आप ये चाहता था, आप मेरे को साथ राम के बिना मेरे को साथ एंजॉयमेंट आप चाहते हैं। फिर लक्ष्मण के दिल में कितना बुरा लगा, कितना गिल्ट,
में feeling bad लगा, फिर लक्ष्मण जाया और सीता के around सीता ये magical grain रखा. So similarly हमारा जिंदगी में हम lesson क्या है? Sita is showing us that we can be attracted to material opulence. Yeah, golden DQ. Golden means wealth, dhanam, gold. So we can similarly be attracted in the forest of the goodness of Krishna consciousness. One में है ये goodness सत्व गुण है. But एक deer बार में होएगा फिर लगेगा ये धनम चाहिए. राम जाओ. So one में है ये distraction होएगा. Similarly राम हमारा पिता है. कृष्ण हमारा पिता है. आप हम सभी इच्छा पूरा करेंगे. So राम जाएगा फिर but एक नहीं जाएगा. गुरु ये श्रील प्रभुपाद के लक्ष्मण के representative है. So Guru stays back. He protects you. Ram is, Krishna is fulfilling our desires, but Guru protects us. And he makes us more Krishna conscious. But हमारा material desires कितना है, फिर गुरु के वैष्णव के अपराध करेंगे. ये 10th offense में don't have material desires, don't maintain material attraction. ये श्रद्धा के नाम के नहीं है. So गुरु के सीता को गुरु अपराध किया. ये दिल में लक्ष्मण में बहुत बुरा है. ये सब एग्जाम्पल ये टीचिंग है. और फिर लक्ष्मण जाया, but before going he put this grain outside this circle. ये circle क्या है? ये 4 regulative principles Iskcon में है. So even though Guru Vaishnav not here, और सभी दिलान में है, ये सभी devotee लोग थोड़ा सा काम है, but ये circle protection है Iskcon. ये श्रील प्रभुपाद के हर temple में protection किया. ये मूर्ति है और ये 4 regulative principles और japa, ये protection है. But हमारा सीता के protected था. She was feeling good. She felt protected. But क्या हुआ? रावण आया ब्राह्मण के तरफ में, ब्राह्मण फॉर्म, और पूछा सीता मेरे को थोड़ा सा ग्रेन दो, दान दो, दान नहीं, राइस, some grain, some प्रसाद. और फिर सीता सोचा मैं उसके सर्कल में बाहर नहीं जा सकते. फिर Ravan said, I'm a Brahmin, so please, help me. I'm so hungry. मैं बहुत भूख लग रही है. So Sita, compassion के साथ, ये compassion in हिंदी में क्या है? प्यार, दया, दया. सीता वो दयालु है. फिर बाहर जाए और रावण के प्रसाद दे. So compassion. Similarly, in Krishna consciousness, we have to watch how much compassion we have for, you could say, anyone around us. Too much compassion can be distracting in Krishna consciousness. ये example है Bharat Maharaj. ये too much compassion deer में था. दोनों deer है. ये क्या कृष्ण बोल रहे हैं? ये Bharat Maharaj deer बहुत दयालु था. और जिंदगी में अंत था, ये डीर को स्मरण किया. कृष्ण ने नहीं स्मरण किया, डीर को स्मरण किया. फिर बहुत दयालु, ये dangerous sometimes. So our compassion, our dayalu for the living entities should be to a certain limit of how much we can handle, how much we can tolerate, how much we can be protected inside the circle. If this compassion takes us outside of Krishna consciousness, and we say, no, Chaitanya Mahaprabhu was so compassionate, Vasudev Dutt, he wanted to deliver the whole world. Mere ko bhav uske hai. I want to save everyone. But circle में जाएगा फिर ये क्या फर्क पड़ता है? आप गंगा में ये समुद्र में डूब करेंगे. फिर आप कौन? Who can you save? So similarly, Krishna by this example
the second reason is रावण को सीता हरण किया और अभी राम को depressed हो गया, both with depressed. But purport में, I don't know if it's in Hindi, but Srila Prabhupada says he showed depression. Depressed नहीं था, but ये externally का manifest किया. ये externally manifest किया. ये राम कौन है? ये कृष्णा, ये स्वयं भगवान कृष्णा. और कृष्णा के कोई नहीं चाहिए, ये सेल्फ सफिशिएंट है, सच्चिदानंद विग्रह, ये पूरा आनंद रामन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनाश परम ब्रह्म विदीयते. कितना आनंद है, ये कोई नहीं चाहते हैं. But still Lakshmi Sahasra Sata Sambrahma se Abhimano, Krishna is worshipped by so many Lakshmis. Even though he doesn't need Lakshmis, he's still worshipped because he wants to reciprocate. So Krishna is teaching us in this, Lord Ramachandra Bhagavan mein, he's teaching us that by showing depression, dukkhi, he's teaching us a few things. So the first thing I understood that he's teaching us is that how to behave with our own wives. Maybe we have, marriage, and we feel like मैं इतना अंदर में त्याग है, मैं कितना कृष्ण के प्यार है, मैं fully detached to the material world. वैराग्य एकदम ऊपर है. फिर मेरा बीवी जाया, मैं कोई नहीं, मैं I don't care, no problem. So ये वाला mood wrong है, ये वाला mood wrong है. Ram is showing us that we should show feelings towards devotees, towards our wife, our children, our friends, even though that we have so much vairagya. Lord Ramachandra wants us to be personal. Personal मतलब हिंदी में क्या है? Personal. ये प्यार है, ये sensitivity है. ये sensitivity बहुत बड़ा word है. Iskcon में, ये धरती में, ये no one has sensitivity. Okay, fine, go. You're leaving? Okay, fine, go, no problem. But Ramachandra externally manifested dukhi, or sukhi nahi, dukhi. So he's showing us how to behave with our, if we have a wife, how to behave with the wife. But Ramachandra doesn't need anyone. So why is he externally manifesting this? He's also not externally manifesting. He's internally vipralamba ke hai abhi. ये सीता और राम कभी नहीं सेपरेट है. ये नारायण और लक्ष्मी कभी नहीं सेपरेट है. ये कृष्ण और राधा रानी कभी नहीं सेपरेट है. ये गौरंग महाप्रभु, गोदाधार पंडित, ये कभी नहीं सेपरेट है. फिर रामचंद्र के दिल में ये विप्रलंब बात है. श्रृंगार रस पपुट में देख रहे हैं. हाँ, श्रृंगार रस, विप्रलंब, सात्विक संचारी, विलाप, मूर्छा, उन्माद, ये कृष्ण के भाव, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या इमोशंस दिल में है. फिर कृष्णा इज अ पर्सन. सो कृष्णा, if we, even us who left Krishna, who left the spiritual world, we sometimes say Krishna doesn't need us. Krishna doesn't have, he doesn't have any feelings towards us. He doesn't need us. He's playing. Bansri mein khel kar rahe hain sab sara din. So hamara dil mein, yeah, Krishna doesn't need us. But on the other side, Krishna is waiting so much for us that every millennium, yada yada dharmasya gane bhavati bharata prittanaya sadhanam, क्यों आ रहे हैं? हमको रेस्क्यू कर रहे हैं. हम चाहते हैं आप. He wants us to come back. Even though he's playing on his flute all day, he still wants us to come back because he's a person. Krishna Brahman, Paramatma और भगवान है. भगवान एक person है. So ये experiment है. ये अभी हम आया material world में. Naturally, we left Krishna, thus we are impersonal by nature. सभी पद में श्रील प्रभुपाद बात कर रहे थे मायावादी. मायावादी कौन है? ये एक डिसाइपल पूछा श्रील प्रभुपाद, मायावादी हम सभी पद में आप लिख रहे हैं मायावादी, ये स्मैशिंग मायावादी. मायावादी कौन है? श्रील प्रभुपाद बोला आप मायावादी.
So हमारा दिल में natural भाव है मायावादी, because we left Krishna. We don't think Krishna is a person. We don't even consider devotees to be persons. Sometimes we walk past devotees and we ignore them. मन में नहीं है. हमें our own world. We are living in our own world. But yeah, Vedic tradition है respect है. The Eastern tradition ये disrespect है. We were learning yesterday. So Krishna wants to teach us how to be personal. ये एक story कहानी, एक last कहानी था. ये disciple ये गुरु का disciple था, और disciple को बीबी मर गया, और disciple said, I didn't cry. मैं दुखी नहीं था. गुरुजी, मेरा बीबी मर गया, मैं दुखी नहीं था. I'm ready for sannyas. मैं दुखी नहीं था means I'm ready for sannyas. आप जानते हैं sannyas? Everyone's following. So he's thinking that detachment is the sign for sannyas. Vairagya tag ये sign है for sannyas. I don't care about anyone. I don't care about any devotees. My wife died. My friend died. No problem. That means I'm ready for sannyas. If I think मैं दुखी नहीं कभी नहीं होएगा. फिर गुरुदेव बोला, आप फिर से शादी करो. आपका शादी के टीचिंग नहीं, आप नहीं समझा. So ये lesson क्या है? ये lesson है that Guru wants to make the disciple, the heart soft. Because if we can't cry for our wife, if you have a wife, then how can you cry for Krishna? And if you can't cry for Krishna, how can you be sannyas? Because sannyas में आप और Krishna सिर्फ है. ये ब्रह्मचारी के साथ रहेंगे, संन्यास अकेले हैं. So संन्यास के मन में सिर्फ Krishna or nothing but Krishna. So if you can't cry for your wife, then how can you cry for Krishna? If you can't cry for Krishna, दुखी नहीं होएगा Krishna के साथ, संन्यास कैसे ले सकते हैं? So ये story है. ये the point is that our heart should become soft, and then we can develop in Krishna consciousness and devotional service. Varahadev को Varahadev और Hiranyaksha और Varahadev came together. They were starting to fight, and Hiranyaksha बोल रहा, ये आप Varahadev, you're a pig. You came from Brahma's nose. You know, so such horrible गंदी का जवाब दे रहे हैं. गंदी को language किया, और Varahadev को आनंद मिला. Some demon is telling you you're a terrible person, you have no good qualities, you're a pig, और आप आनंद मिलेगा? नहीं. But Krishna Varahadev को आनंद मिला. क्यों? आनंद मिला because Hiranyaksha was treating Varahadev like a person. He was treating Varahadev like a personality, not Brahman. Yeah, personality nahi hai, but actually he was treating him like a personality. So demons are not so much of Mayavadi as us. Hiranyaksha was less Mayavadi than us. So we should follow the Hiranyaksha's example. That even if we're angry with Krishna, we can express that anger. Whatever bhav we have to Krishna, yeah, even if it's not right in philosophy, we should express it to Krishna. We should say, Krishna, today I'm not happy with you. Even though you're the Supreme Personality of Godhead, mere man mein kitna gandh hai, I'm not happy. Then please help me, Krishna. So Krishna, ye pasand hai. Krishna ka naam, Krishna's names, the best names to call Krishna, ye kya hai? Yashodanandana, Nandasunu, Nandasuta, Radhika Raman, Parthasarthi. Kyun? Because Krishna के नाम के devotee के साथ है, और फिर कृष्णा बहुत पसंद में लगा. कृष्णा और सिर्फ कृष्णा or सिर्फ names like this Vasudev also very pleasing, but Krishna wants to be spoken a name with his devotees, बहुत pleasure मिलेगा.
So yeah, मेरा मन में आया, yes, yeah, thoughts, and so hopefully we can take Lord Ramachandra's teachings closer, and we can develop our relationship with Krishna as a person, develop our relationship with our friends as devotees, and we can think Krishna as a person, and then only then can we make a relationship with Krishna. Thank you. Please Shama kiya, Shama karo. If I've done any mistake, please forgive me. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Ramayan ki jai.